So in this video guys, we will discuss certain basic adjustments of cash flow statement जो एग्जाम में आता है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और अपने को बहुत कंफ्यूजन भी रहता है उन सारे टॉपिक्स पे। तो इसीलिए we will deal with certain adjustments which will help us while solving cash flow statement problems. Out of all the adjustments, the first and foremost is adjustment relating to provision for taxation. Now, this provision for taxation comes under operating activity and it has got various types of treatment. Like, for example, type 1. Depending upon the problem, I have created 3 to 4 types जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि कब आपको क्या करना है depending upon the type of question. Like for type example type 1. Type 1 में अगर आपको बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म प्रोविजन प्रोवाइडेड है जो कि रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम में और उसी के अंदर पे आता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. Now this provision for taxation will consist of two balances. One will be the closing balance and one will be the opening balance. So supposedly this is the closing balance and this is the opening balance. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्लोजिंग में है 20,000 और ओपनिंग में है 30,000 और कुछ भी नहीं है एडजस्टमेंट वगैरह. देयर इज नथिंग, नो एडजस्टमेंट इज देयर, नथिंग इज देयर. फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रोविजन फॉर टैक्स लेकर के डील करते हो और यहाँ पे दो बैलेंस है ओपनिंग और क्लोजिंग, नथिंग इज गिवन इन एडजस्टमेंट, देन व्हाट टू डू इन दैट केस? The opening balance of provision for taxation, I repeat, the opening balance of provision for taxation will be treated as tax paid during the year. Tax paid during the year. और ये कहाँ पे आता है? shown under outflow of cash, shown under outflow of cash in operating activities. ओके, अब ये क्लोजिंग कहाँ जाता है? ये जो क्लोजिंग बैलेंस है we will treat it as provision for taxation, treated as provision for tax made in the current year. ठीक है? and thus added to the calculation of net profit before tax. So this is the type 1 adjustment. सबसे इजी है, एकदम सिंपल बाबू. जो ओपनिंग रहेगा ओपनिंग को आप सिंपली टैक्स पेड में डाल दीजिए और जो क्लोजिंग रहेगा वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के कैलकुलेशन में डाल दीजिए उसको, बस खत्म. ये होता है टाइप 1.
अब टाइप टू बोले तो टाइप टू में अपने को क्या होगा कि प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के साथ एक एडजस्टमेंट भी डाल दिया जाता है। इन दैट केस अपने को प्रोविजन फॉर टैक्स का एक अकाउंट बना करके आंसर डिराइव करना होता है कि कौन सा टैक्स पेड होगा और कौन सा प्रोविजन मेड होगा। Now let's come to the question. Supposedly again, I will keep the amount same. Provision for taxation, closing 20,000, opening 30,000. And one more adjustment is provided in the question. Now what is the adjustment? मान लीजिए adjustment में ऐसा लिखा हुआ है provision for tax made during the year, ऐसे करके लिखा हुआ है provision for tax made during the year, और मान लीजिए अमाउंट दिया हुआ है ₹40,000। नाउ इन दैट केस आप पहले टाइप में जो सोल्यूशन यूज कर रहे थे, जो टेक्निक यूज कर रहे थे, वो आप यूज नहीं कर सकते। इन दिस केस यू कैनॉट डू दैट। आपको एक एडिशनल लेजर बनाना पड़ेगा यहाँ पे। किस चीज का? प्रोविजन फॉर टैक्स का एक लेजर बनाना। तो ये अपन ने एक लेजर बनाया। प्रोविजन एक लाइबिलिटी आइटम है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे आता है। तो 110 टाइम्स ये क्रेडिट साइड पे ही खुलता है। कोई भी लाइबिलिटी आइटम होता है तो वो क्रेडिट साइड पे ही खुलता है। तो वी विल राइट इट डाउन एज बाय बैलेंस बी। We'll write the opening balance here, and the opening balance is 30,000. Okay. Then we'll write the closing balance here. To balance CD. To balance CD. 20,000. Now it's written over here. Provision for tax made during the year. It's written over here. Provision for tax made during the year. उस पे क्या करना है अपने को? जब भी मेंशन करता है क्वेश्चन में कि ड्यूरिंग द ईयर ये प्रोविजन सेट किया गया है, that will come over here by statement of profit and loss, 40,000. So अब अगर आप इसको क्लोज करो, both sides 70,000, balancing figure will be 50,000. We will write it down as to bank and mention it as tax paid. Now in this case you can figure out कि ये जो बैलेंस आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे 50,000, this 50,000 will come under the operating activity as tax paid, और ये जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल है that will also come under operating activity but will be used in the calculation of net profit before tax. This is basically type 2 adjustment, जहां पे ओपनिंग क्लोजिंग दे देगा और आपको यहाँ पे
प्रोविजन मेड क्वेश्चन में प्रोवाइड किया हुआ रहेगा, तो अपने को लेजर बना करके टैक्स पेड का पता लगा लेना है। ये टाइप 2 है। अब अपने आते हैं टाइप 3 पे। टाइप 3 में क्या होगा, सेम क्वेश्चन रखते हैं, टाइप 3 में। यहाँ पे भी अपने को वैसे ही क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्वेश्चन में प्रोवाइड कर देगा। बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और नोट्स टू अकाउंट्स में वो लोग मेंशन करेगा कि इसके अंदर आता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जिसमें एक ओपनिंग बैलेंस रहेगा और वापस से एक क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। फॉर अ चेंज फिगर्स को थोड़ा चेंज कर देते हैं। ओपनिंग 60,000 एंड वी विल कीप द क्लोजिंग एज 72,000। अब आपको एडजस्टमेंट्स दिया हुआ रहेगा। नाउ एडजस्टमेंट में थोड़ा सा चेंज आएगा। कैसे चेंज आ सकता है, जैसे मान लीजिए एडजस्टमेंट में लिखा हुआ रहेगा ऐसे, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, से सपोज 56,000। वापस से वही बात हो गया, when you have a opening and a closing balance, along with that you have additional information about tax paid, तो वापस से आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। सेम टेक्निक, क्रेडिट, डेबिट, रुपीज, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। वापस से ये एक लाइबिलिटी आइटम क्रेडिट साइड पे खुलेगा। सो बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग इज 60,000 followed by 72,000 over here, that is to balance C. Now both the amounts are given over here. Now look carefully what's given in adjustment. It's given that tax paid during the year is 56,000. यहाँ पे, और ये यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर. So it means this time they have provided you the outflow amount of tax under operating activity, that is to bank. They have provided you this amount, which comes to 56,000. It's obvious that the benefit will appear on the credit side as by statement of profit and loss, and you can write down one more line for your convenience, provision made, and that will come to 68. So guys, these are the three types of adjustment. The first one is without the ledger accounts, when only the opening and closing balances are provided. The second one is when opening closing balances are provided. Along with that, an additional information is given about provision for tax made during the year. And under type 3, same opening closing balance of provision for tax is given along with tax paid during the year. So if tax paid is given, then the balance will be provision made. And if provision made during the year is given, the balance will be tax paid. So these are the three most asked adjustment about provision for tax. And one more adjustment you can relate. आप इसके साथ और एक चीज भी रिलेट कर सकते हो। कभी कभी आपको एडजस्टमेंट में बस आपको दिखेगा टैक्स पेड या प्रोविजन मेड, बस कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं है, बस रहेगा टैक्स पेड या प्रोविजन मेड. There is no closing balance, nothing like.
और अगर ऐसा दिया गया है कि टैक्स पेड एंड प्रोविजन मेड और एडिशनल ओपनिंग क्लोजिंग कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बस क्वेश्चन में ऐसे मान लीजिए दिया हुआ है टैक्स पेड 20,000, प्रोविजन मेड 50,000, इन दैट केस कोई लेजर वेजर कुछ भी बनाने का जरूरत नहीं है। जो प्रोविजन मेड दिया हुआ रहता है वो चला जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में नेट प्रॉफिट के कैलकुलेशन में काम पे आ जाएगा। और ये जो 20,000 दिया हुआ है, वी विल ट्रीट इट एज टैक्स पेड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। So guys, hopefully it will help you. Thank you.